हाय एवरीवन, दिस इज प्रतीक्षा मिश्रा एंड वेलकम बैक टू पीएम बाय बसने एकेडमी। सो आज आम डिस्कस करने जाऊँगी बॉटनी ऑनर्स पिलामानकर DSE-I पेपर रे जहाँ जहाँ भी सब लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी सर्ट नोट अच्छी जमी मुझे प्रति पेपर सब किसी डिस्कसन करदे ऑलरेडी कोर 11 एंड कोर 12 जहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन सर्ट नोट अच्छी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट सर्ट नोट अच्छी सब किसी डिस्कसन करदे सेमती आज मु 5th सेमिस्टर यानी एनालिटिकल टेक्निक एंड प्लांट साइंस रे जहाँ भी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट सर्ट नोट रही 1.5 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स जहाँ भी क्वेश्चन रही सबू मुझे डिस्कसन करदेवी। सब भाई एथर भी कहूँ प्लीज़ पेन एंड पेपर बाहर करूँ लिखा स्टार्ट करूँ बिकज पेन एंड पेपर बिना आप खाली शुणीदेवे कौन कौन अच्छी क्वेश्चन ताले जमा भी एग्जाम रे भल करें प्रिपेरेसन शुद्ध बेकार हो बर्तमान क्वेश्चन लिखतु क्वेश्चन लिखले ही आपण मैंने जानीपारे सिलेबस रे कौन कौन क्वेश्चन हो पारे केमी आम प्रिपेरेसन करूँ कौ क्वेश्चन आमको इजी लगुच कौ क्वेश्चन को आम प्रथम स्टार्ट करूँ एंड आम गोटे क्वेश्चन को केतिकी टाइम रे सारू इच एंड एवरीथिंग मैनेज हो पार केवल आपण मैंने जब लिखि रखिए से मुझे पेन एंड पेपर बाहर करूँ सिलेबस आपण मानक तो देखा ही जाउथबो स्क्रीन ने स्क्रीनशॉट करके रखि दियंतु सिलेबस जदि सिलेबस स्क्रीनशॉट न करूचंती सिलेबस पाखे अच्छी ताल सिलेबस को मध्य आणंतु पाखे धरंतु बसंतु एंड आम ए स्टार्ट करबा हमर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करबा आगु कहि रखिबे पिला माने जदि वीडियो हेल्पफुल रोचे ताले प्लीज लाइक करंतु फ्री ऑफ कॉस्ट रे तो आपण मानकु सब प्रकार रो फ्री एजुकेशन मु प्रोवाइड करूची बस आपण माने टिके लाइक कर दियंतु जेते सांग अछंती समस्त को हेल्प करंतु आपण मानक पई ही ए सब वीडियो मु बनौची केवल आपण मानकु हेल्प हबो बोली तो आपण माने जेते पारचंती सारा ओडिसा रे सांग मानकु शेयर करंतु वीडियो एंड जो माने वर्तमान सुधा भी चैनल को सब्सक्राइब करनांती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु ताले जिबा हमर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आडको लेख रखंतु द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन of flow cytometry. Briefly describe the working principle application of flow cytometry. Next most important long question, what is TEM? What is TEM? Describe its principle, application, advantages and disadvantages. Okay. So the next most important long question, what is SEM? What is SEM? Describe its principle and application. नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन कहबा को जाउची टिके लेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेस इंपोर्टेंट एथि पई कारण ए क्वेश्चन आसीबार चांस टिके कम रही जेहेतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही से क्वेश्चन आसबार चांस टिके कम रही किंतु मु सब बेले सब वीडियो रे कहि चलछि जे कोविड टाइम पर क्वेश्चन टिके स्ट्रिक्टली प्रिपेयर करा होछि से जोटा लॉन्ग क्वेश्चन न हबो सेही टाइप रो क्वेश्चन मध्ये एग्जाम रे पळै आछि जोत पई कि पिला मानकर एग्जाम बहुत खराब हो जाउछि सेथि पई मु क्वेश्चन को लेस इंपोर्टेंट कहिछि लेस इंपोर्टेंट माने आपण याको प्रिपेयर हेबे किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जेतिकी भल से प्रिपेयर हेबे ताठ टिके लेस टाइम देके ये क्वेश्चन को प्रिपेयर हेबे कारण ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट आसीबारे बहुत चांस अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन आसी परिबेनी बट मे बी आसी पारे ओके सो लिखंतु नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन लेस इंपोर्टेंट व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल and applications of light microscopy. Briefly describe the principle and application of light microscopy. Next, what is fluorescence microscopy? What is fluorescence microscopy? Briefly describe its principle and application. What is fluorescence microscopy? Briefly describe its principle and application. Next question. What is centrifugation? What is centrifugation? Give a brief account on density and differential centrifugation. ये दुईटा जिनस विषय पचराई गोटे हूँ डेनसीटी सेंट्रिफ्यूगेशन आ गोटे हूँ डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन सो आपण मानक डेफिनेशन लिखा पड़ो सेंट्रिफ्यूगेशन कौन सेंट्रिफ्यूगेशन क्या द्वारा आम कराउछंती एंड केते प्रकार सेंट्रिफ्यूगेशन रही देन डेनसीटी सेंट्रिफ्यूगेशन कौन डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन कौन ओके नेक्स्ट डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स डिस्क्राइब देयर यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च describe their use in biological research. Next, What is sureshot? What is sureshot? Describe their use in biological research. Describe their use in biological research. Next, What is radioisotopes? Describe their use in biological research. Next, What is
Principle and applications of autoradiography. Next, what is spectrophotometry? What is spectrophotometry? Describe its principle and applications in biological research. Next, chromatography. Chromatography, describe about the principle, application of paper chromatography, principle, application of paper chromatography or thin layer chromatography. Next, principle and application of molecular sieve chromatograph. Molecular sieve, SIEVE, molecular sieve chromatograph. Next, describe principle and application of mass spectrometry. Mass spectrometry, SPECTROMETRY, mass spectrometry. Next, briefly describe on X-ray diffraction. Briefly describe on X-ray diffraction and X-ray crystallography. Next, very important long question, what is electrophoresis? What is electrophoresis? Describe working principle and application. Describe working principle and application. Application कहार देथिबा जेकोनोसी गोटे आपनकर सिलेबस रे एज अछि पेज अछि एसडीएस पेज अछि तो जेकोनोसी गोटे रो आपनको एग्जांपल से पचारिथिबो ठीक अछि. नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, what do you mean by measure of central tendency? Describe properties, merits and demerits of arithmetic mean. Next, what is statistics and biostatistics? Describe various methods of representation. Of data in statistics. इथर आपण दीटा जाक मेथड रे देखेबे, गोटे टेबुलर मेथड रे देखेबे एंड ग्राफिकल मेथड रे मध्ये देखेबे. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय chi-square test? Briefly describe on chi-square test of fit. जेमती chi-square test पचाजे सेमती t-square test मध्ये आसीबा. What is test of significance? Describe on t-test. So एठी आपनको एग्जांपल देके पचारिबा. आइदर एमिति थियोरेटिकली हिसाब रे बायोस्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आसी पारे किंबा प्रोब्लेमेटिक मेथड रे मध्ये आसी पारे. थियोरेटिकली आसिले आपण मानको निजे प्रॉब्लम देके सॉल्व करिया पड़िबो chi-square test रो t-square test रो एग्जांपल देके सॉल्व करिया पड़ो जोटा कि बेस्ट. अदरवाइज एग्जाम रे टिके प्रोब्लेमेटिक मेथड रे आसे माने सेमाने क्वेश्चन पचारि थांती आपण मानको chi-square test एंड t-square test रो फार्मूला यूज करिकि क्वेश्चन सॉल्व करिया को पड़िबो. मैथमेटिकल वे रे मध्ये पचारि पारे. ओके, तो जेतिकि भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहिला लॉन्ग क्वेश्चन मु सब डाकी देली. आई होप समस्त क्लियरली लिखिथिबे. बहुत पिला माने कहउचंती जे मैम आपण तो सिलेबस ही डाकी दोचंती. सो पिले मु कहि रखुची जे क्वेश्चन मु बनौनी, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी रो आछि एंड बहुत बड़ा एक्सपीरियंस्ड लेक्चर माने क्वेश्चन बनौचंती. सो यस क्वेश्चन मु जानिची कोन कोन आसीबो सेहिति पई मु आपण मानको गाइड करूची एंड मु 100% गारंटी देके कहउची वर्तमान जो मान भी वीडियो देखुथिबे सेमानक भितरु मैक्सिमम पिला
सिलेबस रे कोटा लॉन्ग क्वेश्चन कोटा शॉर्ट नोट आइडेंटिफाई ही करि पारु नथिबे काना मु भी आपण मानक स्टेज देके आछि सेतबेले मु आपण मानक स्टेज रे थिली मु आइडेंटिफाई ही करि पारेनी सिलेबस रे कोटा लॉन्ग क्वेश्चन कोटा शॉर्ट नोट एंड कॉलेज रे लास्ट मोमेंट रे एग्जाम टाइम थिबा किछि समय पूर्वरु ही कहंती किछि दिन थिबा ता आगरु कहंती जे एटा लॉन्ग क्वेश्चन एटा शॉर्ट नोट तो सेहिति पई आपण मानकर पाठ पढा को इजी करबा पई फोर्थ सेमिस्टर सरीनी फिफ्थ सेमिस्टर पई मु ऑलरेडी आपण मानक क्वेश्चन दे देलेनी जोत आपण माने बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करि परिबे एंड जो मैंने भावुंट प्लीज कि सिलेबस मु डाकी दूची सिलेबस तो मुझे डाकुनी एंड जी क्वेश्चन डाकुची मु 100% ग्यारंटी दे कहूँ जे एतिकी क्वेश्चन जदि आपण मैंने प्रिपेयर करदे 90% श्योर रखिए हाँ 1 मार्क क्वेश्चन टिके भूल हम कारण जो मैंने भल से थरोली प्रिपेयर करते बही भितर पढ़ुवे से 1 मार्क क्वेश्चन गोटे भूल हो पारे कि मैक्सिमम 2टा भूल हो पारे जो मैंने 1 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर ही कर बही पढ़ु नथिबे जेतिकी थ्योरी मु कहूची सेतिकी नोट्स फॉलो करुथिबे तो सेमानकर मिनिमम 3 रु 4टा शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है पारे माने 1 मार्क क्वेश्चन ठीक है पारे सो 1 मार्क क्वेश्चन को वर्तमान एतेटा गुरुत्व दियंतुनी थ्योरी उपरे फोकस करंतु प्रथम जतबेले थ्योरी हेई जाउची सेतबेले ता परे आपण एमसीक्यू पई स्टार्ट करंतु एंड यस मु नेक्स्ट मध्य जतिको सिलेक्शन क्वेश्चन दोची सिलेक्शन क्वेश्चन नो वीडियो सीरीज सरी गला परे केमिति प्रिपेयर करिवे केमिति एट ए टाइम सेमिस्टर एग्जाम पई एंड एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपेयर करिवे ता मध्य मु आपण मानक पई वीडियो नै के आसीबी जोति पई आपनक पई पूरा इजी हे जिवो फिफ्थ सेमिस्टर हेलानी लास्ट ईयर रे मैक्सिमम पिला वर्तमान पीजी एंट्रेंस देबे तो केमिति आपण माने पीजी एंट्रेंस पई प्रिपेयर हेबे ता पई मध्य मु गोटे वीडियो नै के आछि जेतेबेले सीरीज सरी जिवो सिलेक्शन क्वेश्चन रे सीरीज सरी जिवो मु सेतेबेले वीडियो नै के आसीबी सो से वीडियो को निश्चय देखिबे आपण माने पई निहाती भाबरे हेल्पफुल रहइबो वर्तमान थ्रू स्टार्ट होई आपनकर फिफ्थ सेमिस्टर तो बहुत भलो से आपण माने प्रिपेयर करि परिबे एट ए टाइम सेमिस्टर पई एंड एंट्रेंस पई ठीक अछि ताल जिबा नेक्स्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन को 5 मार्क्स क्वेश्चन को कौन कौन हो पारे जति क्वेश्चन डाकिबी से क्वेश्चन 5 मार्क्स रे भी आसी पारे 2 मार्क्स रे भी आसी पारे 3 मार्क्स रे भी आसी पारे 1.5 मार्क्स रे भी आसी पारे जदि आपण ताको मैक्सिमम 4टा पॉइंट करके पढुचंती 4टा रु 5टा पॉइंट सपोज मोइलो कहबे जेमति कि गोटे क्वेश्चन होचे माइक्रोस्कोपी 1.5 मार्क्स आसिले आपण को गोटे पॉइंट लिखिबार अछि 2 मार्क्स रे आसिले 2टा पॉइंट लिखिबार अछि 3 मार्क्स रे आसिले 3टा पॉइंट 5 मार्क्स आसिले 5टा पॉइंट लिखिबे तो माइक्रोस्कोपी गोटे क्वेश्चन जदि आपण ताको 5टा पॉइंट करके पढ़ी थिबे से 5 मार्क्स रे आसिले ताको लिखि परिबे 1.5 मार्क्स रे आसिले भी लिखि परिबे जदि आपण माइक्रोस्कोपी क्वेश्चन टाको केवल तार डेफिनेशन पढ़ी देथिबे आपण मन जानि चंती भाबी कि जायचन जे मु माइक्रोस्कोपी पढ़ी छी सेटा 1.5 मार्क्स रे आसीबो मु ताको लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे प्रिपेयर करिबिनी कि देखला हाल को माइक्रोस्कोपी 1.5 मार्क्स न आसी कि 5 मार्क्स क्वेश्चन ने पळि आसी तो कोन करिवे गोटे पॉइंट पढ़ी कि जायचंती 5 मार्क्स तो आपण केही देबेनी गोटे पॉइंट लिखले सेठी आपण कोन करिवे आ बढ़ाई कि लिखि परिबे कि बढ़ाई कि त लिखि परिबेनी तो जदि हमें टिके अधिक प्रिपेयर करिके जाइथिबा से 5 मार्किया क्वेश्चन पई प्रिपेयर करिके जाइथिबा जदि से सेम क्वेश्चन ता 1 मार्किया रे बा 1.5 मार्क रे पळि आसी कि 2 मार्क्स रे पळि आसी ताहले हमें ताको काटी के छोटो करिके लिखि परिबा काटिबार त हमें बाहिर आराम से काटी दे परिबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन कर दे परिबा 5 मार्क्स क्वेश्चन को 2 मार्क्स करिवारे हमको बिल्कुल भी डिफिकल्ट हबनी तो सेहिति पई म बारंबार एमिति का क्वेश्चन आपण मन को दोची जे गोटे क्वेश्चन एमिति प्रिपेयर हेबे जोटा 5 मार्क्स पई आसीबा 2 मार्क्स पई आसीबा 3 मार्क्स पई मध्ये आसीबा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करबा को पड़िबनी ओके ताल फर्स्ट क्वेश्चन लिखंतु डिफरेंशिएशन बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट लाइट माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट TEM versus SEM next principles of fluorescence microscopy ठीक है हाथ स्पीड करंतु नेक्स्ट what is fluorophore पिले जदि वीडियो हेल्पफुल रोची ताले प्लीज 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 लाइक करंतु जेते सांग अछंती सेमानन को भी शेयर करंतु सेमानन को भी हेल्प करंतु आम माने जदि अन्य मानन को हेल्प करिवे हमर मध्य हेल्प हे परिबो ठीक अछि अन्य मानन को हेल्प करिवा हमर काम आमे बहुत भलो पिला तो आमे अन्य मानन को मध्य हेल्प करिवा आमे आगु को जिबा अन्य मानन को मध्य आगु को जिबारे सहायता करिवा तो सेमानन को मध्य ए वीडियो लिंक शेयर करंतु चैनल शेयर करंतु जेते जूनियर सीनियर जो माने भी अछंती सेमानन को मध्य चैनल लिंक शेयर करंतु सेमानन को मध्य हेल्प करंतु ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट इज FACS नेक्स्ट
Advantages or applications of FACS. Next, advantages of TEM. Advantages of TEM and SEM. Next, negative staining. Next, fixation versus cryofixation. Fixation versus cryofixation. Next, what is shadow casting? What is shadow casting? Next, what are fridge fracture? What are fridge fracture and fridge itching? Next, advantages of fridge fracture and fridge itching. Next, define centrifugation. Next, principles of SEM and TEM. Principles of SEM and TEM. क्वेश्चन जदि SEM TEM मिसिक आसछि ताले 5 मार्क्स क्वेश्चन आसीबा केवल SEM 2 मार्क्स क्वेश्चन बा 3 मार्क्स क्वेश्चन आसीबा केवल TEM सेमती 2 मार्क्स किबा 3 मार्क्स क्वेश्चन ने आसीबा 2 मार्क्स 3 मार्क्स रे केबे दीटा अंक मिसिक आसीबानी ओके नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट इज डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन नेक्स्ट sucrose density centrifugation. Next, ultra centrifugation. Ultra centrifugation गोटे बहुत important question. तो यार advantages पढ़िबे, basic principles पढ़िबे, application भी पढ़िबे. जे कोनोसी गोटे question exam रे आसीबा. Either advantages of ultra centrifugation पळे आसे, किंबा principles of ultra centrifugation पळे आसे, किंबा uses बा applications of ultra centrifugation मध्ये आसी पारे. Okay? Next, what is RPM? Next, CSCI density gradient centrifugation. CSCI density gradient centrifugation. Next, what are radioisotopes? What are radioisotopes? Next, applications of radioisotopes. Applications of radioisotopes. Next, autoradiography. Autoradiography and its application. Next, pulse chase experiment. Pulse chase experiment. Next, spectrophotometry. Spectrophotometry. Next, different parts of spectrophotometer. Next, applications of spectrophotometer. Next, chromatography. Next, paper chromatography. Next, TLC or GLC or HPLC. तीनटा जाक अलग अलग क्वेश्चन आइदर टीएलसी आसी पारे और जीएलसी आसी पारे और एचपीएलसी आसी पारे तीनटा जाक मिसेकी केबे भी आसीबानी ठीक अछि नेक्स्ट कॉलम क्रोमाटोग्राफी कॉलम COLUMN कॉलम क्रोमाटोग्राफी नेक्स्ट आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी पिले वीडियो टिके लॉन्ग हे पारे कारण मु एमिति क्वेश्चन आपण मानकु डाकु जे क्वेश्चन जेते भितरु आसिले भी जेमिति बुलाई बांके आसिले भी आपण माने करि परिबे आपण माने देखुतबे मु जदी डाकी थांती क्रोमाटोग्राफी भितर सब जाउची किंतु फिर भी मु पूरा बीट बाय बीट गोटे क्वेश्चन मु डाकुची एइथ पॉइंट डाकुची जे आपण माने पूरा क्लियर हे जिवे केमिति का क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे तो पेपर मे बी टिके लंबा हे पारे टिके अधिक क्वेश्चन हो पारे किंतु फास्ट रु लास्ट जाए वीडियो देखो जमा भी स्किप करंतुनी क्वेश्चन जदि गोटे स्किप हो ताले एग्जाम रे आपण मानकर मुंड काम करबनी ए क्वेश्चनटा कुआडू आसीगला बोली तो वीडियो पूरा फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु एंड जो क्वेश्चन मु कहूची से क्वेश्चन लिखंतु जमा स्किप करंतुनी कोनोसी गोटे भी क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मॉलिक्यूलर सिव मॉलिक्यूलर सिव जदि क्वेश्चन आछी ताले आपण ता भीतर तार प्रिंसिपल लिखिबा एंड तार यूजेस मध्ये लिखिबा यूजेस माने एप्लीकेशन नेक्स्ट what is affinity chromatography next mass spectrometry next
X-ray diffraction. Next, principle and applications of X-ray crystallography. Principles and applications of X-ray crystallography. Next, electrophoresis. Next, materials required for age माने AGE, age. Next, principles of AGE. Next, difference between AGE and PAGE, age versus page. Next, applications of page. Next, what is SDS page? What is पचार माने एठी आपन को डेफिनेशन लिखबार अछि जदि 2 मार्क्स क्वेश्चन पचारछि डेफिनेशन लिखि देबे जदि 3 मार्क्स क्वेश्चन किबा 5 मार्क्स क्वेश्चन अछि डेफिनेशन सहित प्रिंसिपल मध्ये लिखिबे एसटीएस पेज रा प्रिंसिपल मध्ये लिखिबे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट व्हाट इज डाटा कमा पॉपुलेशन कमा सैंपल comma variables comma parameters in statistics. Next, what is the advantages of tabular representation of data? Next, graphical representation of data. Graphical representation of data. Next, representation of data. Next, histogram and its advantages. Next, arithmetic mean. Next, median versus mode. Next, central tendency. Next, relationship between mean, median, mode. Next, dispersion. Next, range. Next, mean deviation and standard deviation. Mean deviation and standard deviation. Next, variance. Next, test of significance. Test of significance. Next, t-test. Next, correlation. Next, null hypothesis. Next, chi-square test. Next, uses of correlation. Next, what is chi-square test for goodness of fit? What is chi-square test for goodness of fit? Next, last question, applications of fluorescence microscopy. Applications of fluorescence microscopy. Okay, I hope समस्ते जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मो डाकिली लिखि देथिबे क्लियर हो जाइथिबे कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन कौन शॉर्ट नोट रही शॉर्ट नोट रे कोटा इंपोर्टेंट कोटा नॉन इंपोर्टेंट मु एथि कहूनी कारण शॉर्ट नोट बहुत प्रकार आछि 5 मार्क्स रे आछि 3 मार्क्स रे आछि 2 मार्क्स रे आछि मु जदि कोटा इंपोर्टेंट कहि देबी तो आपण माने केवल सेटा को प्रिपेयर हेबे बाकीटा छाड़ देबे सेथि पई मु कोटा इंपोर्टेंट कोटा नॉन इंपोर्टेंट बिल्कुल भी कहूनी एंड सब क्वेश्चन प्रिपेयर करंतु जेतिकी भी क्वेश्चन मैं आपन कहली सबुतिक एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो थुआ हेतिबो क्वेश्चन हो गोटे दीटा क्वेश्चन में भी बही भितर टिके बुले के आसी पारे अदरवाइज 90% क्वेश्चन एया ही आसीबा एंड मु आपण मानकु समस्त को कहूची एबेटु पाठ पढ़ा लागि दियंतु एबेटु पढ़िले ही 90% सिक्योर करि परिबे ऑलरेडी मु जो क्वेश्चन देछि से क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबा ही आसीबा सेमिस्टर रे त 90% रखि ही देबे बट आपण मानकु एंट्रेंस भी क्वालिफाई करिवार अछि सिंपल बीएससी करिके किछि लाभ नै आपण माने हायर एजुकेशन को जानतु पीजी करंतु पीजी करिया पई एबेठु लागि पड़ंतु बही फॉलो करंतु सीबीसीएस पैटर्न बुक फॉलो करंतु सेमिस्टर पई एंड जहाँ भी अदर बुक्स दरकार मो टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल कर दोचे नोट्स मध्ये अवेलेबल कर दोची सो प्लीज आके समस्त टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु तळे मो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे देबी एंड जो माने भी जानि पारनांती मैक्सिमम पिला अछंती लिंक रु जाई के मध्ये जॉइन करि पारनांती सो से माने टेलीग्राम डाउनलोड करंतु सर्च करंतु पीएम बायोपेशन एकेडमी ऑफिशियल
गोटे मोर ऑफिशियल चैनल अच्छी आ गो डिस्कशन ग्रुप अच्छी डिस्कशन ग्रुप आपण मैंने आपण प्रॉब्लम जहाँ भी अच्छे से कमेंट करेंगे एंड यूट्यूब रे कमेंट करूँ आपण मानक नेक्स्ट वीडियो कौन पाई दरकार आपण कौन कौन चाहूँगी जहाँ भी मटेरियल्स जहाँ भी क्वेश्चंस आपण मानक जहाँ भी नीड रही आप यूट्यूब रे कमेंट करूँ वीडियो तले एंड टेलीग्राम को जॉइन करूँ एंजॉय करूँ फ्री नोट्स फ्री बुक्स फ्री स्टडी मटेरियल फ्री एवरीथिंग सो देखा नेक्स्ट वीडियो रे डीएससी पेपर 2 रो सिलेक्शन क्वेश्चन को लेकिन वर्तमान सुधा जहाँ भी मुझे कहली से सब को प्रैक्टिस करूँ नोट्स डाउनलोड करूँ एंड प्लीज जब आजकार वीडियो भल लगे लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल को एंड शेयर करूँ थैंक यू।